Hi, good afternoon, everyone. I hope you guys have joined in and now you need to turn on your videos before I start. Good afternoon, sir. Okay. I see Good afternoon, sir. Atish. Jay. Hi, good afternoon. Good afternoon, sir. Chinmay. Simar. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hi, man. I need your video. Sir, actually, I am facing some network issue today. So, Okay. So make sure in turn, kabhi you put on your video so that my coordinator puts a attendance mark accordingly. yeah, sure. Ishan. Who else? देखा और कौन है? निष्ठा परी है ना? हाँ सर, हाँ सर. और एक वो स्नेहित. मैं चालू करता हूँ. Let guys join in as and when they want to. हम लोग चालू करते हैं. So this particular session today that we have, which is happening online and not physically, for some it has always been online. So that's okay. What we are doing today is, I think other than Atish, you guys were there in the last session that I took, which was on chapter 3, where we did what? Where we did coordinate geometry. And in coordinate geometry, we did that introduction part. So Ishan, Nishtha, Pari, please put on your video. And Rekha, अगर video on नहीं होता है तो आप attendance मत देना इन लोगों को. Yes sir. And after some time, we'll put them in waiting room. So, okay, so there is somebody at Khargar also. तो मनीष बस एक ये वाला ही कैमरा चालू रखना, टीवी वाला. यू डोंट नीड बोर्ड वाला कैमरा. बोर्ड वाला चालू करने की जरूरत नहीं है. ये बच्चे का नाम क्या है? स्नेहित. गर्व. यस सर. गर्व कुमार, आपका तो ये सेशन हो गया बेटे. सर प्रैक्टिस सेशन है क्या? You want, you can attend. We are doing inequalities today. Largely we'll do inequalities today. If you want, you can re-attend this, but I remember you doing it earlier. And even next Sunday भी ये class ऐसे ही होगी, which is I think chapter 5 या 6 कुछ होगा, which you would have done anyways again. So again, if you want to do, you can attend. उसके बाद वाला जो Sunday है, which is 31st July, you guys will do chapter number 15, probability. तो वो तुम तब अटेंड कर सकते हो. और तुमको अभी अटेंड करना है तो अटेंड करो, नो वरीज. और तुमको लगता है नहीं घर जाके देयर इज अ बेटर थिंग टू डू, तो तुम फ्री हो, यू कैन आल्सो डू दैट. चलो. So I was telling you that when we met last time, which is when I took your last session, whenever that was, we did chapter 3 and there was some part left in chapter 3 and we were doing coordinate geometry, if I remember correctly. From SAT's perspective, बहुत limited scope था. So we had discussed theory and then we did some problem and we couldn't finish और हमने उसको वहीं पे छोड़ा था. So I plan to complete that today. And once that is done, we move on to another chapter, which is chapter 4, and that is talking about inequalities. So that's my agenda for the day. Chapter 3 ka balance part and chapter 4 inequalities. Now I see few new faces in that sense. Guys who were not with me in my last session when I was taking that session. So I see Atish there, and then almost Sabhi the, Nishta was there, Vinayak Patil. So Vinayak was also not there. So aap logon ke liye what I will do is I will do a quick revision of chapter 3 coordinate geometry, some basic things that you must know if you have to solve problems for on SAT paper. दो ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट फिर भी समझ में नहीं आए. So you patiently wait. I think we'll take another 20-25 minutes and we'll wrap it up. And when we start a new topic, which is chapter 4, so you will follow. But I'll still take a quick revision. So I'll do all the screening thing. You don't have to worry for that. Here is my working space and I'm ready to go. Vinayak Patil, before I do this, let me first have a look at Vinayak Patil. 1 minute. Vinayak, are you there? So Vinayak Patil है lecture में. So Vinayak, you need to put on your video. Yeah, sir, 1 minute. जल्दी करो. Okay.
So Vinayak, I don't know if you heard me saying all these things अभी जो मैंने announcement किया, क्या सुना आपने मुझे? Yes. So हम लोग chapter 3 का कुछ balance part कर रहे हैं, which is coordinate geometry. I'll go through the theory part quickly once again for benefit of Atish and yourself, and then we will do some problems, some selected problems, and then we'll go to a new chapter. So I guess you will follow most of it in chapter 3 का हम जो balance करेंगे, chapter 4 तो पक्का, नहीं तो भी थोड़ा patiently बैठना, and then we'll talk separately. चलो, ठीक है, okay रहेगा, no worries. So guys, let me start with coordinate geometry. We had defined coordinate geometry as geometry or measurement happening over a 2D plane, and this 2D plane was measured by two scales. एक horizontal scale था और एक vertical scale था. The vertical scale was called x-axis, and the horizontal scale was called x-axis, and the vertical scale is called as y-axis. And then we were talking about some points being there, and let's say that point has coordinates as x1, y1. x1 का मतलब origin से x-axis पे x1 distance जाओ, y1 का मतलब origin से y-axis पे y1 distance जाओ, and you will be able to locate a point. Let's say this point is P. Let's say there's another point and उसको कुछ नाम दे देते हैं, P है ना, तो Q नाम दे देते हैं. So let's say there's a point called Q, जिसका coordinate point है x2, y2, and there's another point Q. So x2, and let's say this is y2. So with respect to SAT, we are supposed to know few things. सबसे पहले distance formula. Distance between these 2 points. Distance between these 2 points is given by formula जो आपको याद रखना है. क्या था भाई? Any idea? Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 square. Okay. ये basically वो Pythagoras theorem है. This will give me distance between these 2 points. If I have to find midpoint between them, so that was average. x1 plus x2 by 2. Yes. X coordinate के averages ले लो. ये हो गया midpoint का coordinate. जो भी midpoint होगा इन दोनों के बीच में, उसके coordinates होंगे x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 by 2. These are x and y coordinates of midpoint between these 2 points. हमने ये सब देखा था. Then we talked about slope of line. So slope of this line, y2 minus y1 upon x2 minus x1 हो जाएगा. we found by rate of change in y for a unit change in x. So x2 y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is called as slope of line. हमने ये भी देखा था. Slope of line defined by m. So if there are 2 lines जिनका slope है m1 and m2, and if we know that if they are parallel, then m1 into m2 will be equal to -1. ये सब मैं last time perpendicular, right? Or I can say yes, if lines are perpendicular. If lines are perpendicular, if there are 2 lines on coordinate plane which are perpendicular. So let's say there's another line, and this line is perpendicular, और इसका slope मान लो m2 है, इसका slope m1 है. तो इन दोनों के slope के बीच का relation होगा, product of their slope would be equal to -1, or slope of one would be reciprocal of the other and sign change. कैसे भी समझ सकते हो. If lines are parallel, m1 equals to m2. if lines are parallel, yes, then relationship between these slopes would be m1 is equal to m2, or m1 by m2 equal to 1. So ये वो basic चीजें हैं which you must know to solve problems on coordinate geometry. अब इसमें अगर trigonometry साथ में आएगा या circles का कुछ question आएगा, you must have done trigonometry and circles आपको सर ने करा दिया होगा. So that is additional. But pure coordinate geometry, line based, point based कोई question आएगा, this much of knowledge should be more than enough to handle all problems on SAT. So let's test this. Any questions here? So this is something that we did. अब हमने कुछ questions भी कर लिए थे. I will start from the problem where we last left.
So the rule is, Vinayak, Atish, you are supposed to solve a problem. I'll give you some defined time. Then in the chat box, you are supposed to privately reply to me. तो आपको दिखेगा chat box में to Manish Saraf, उसमें मुझे आंसर भेजना A, B, C, D. अगर ग्रिड इन क्वेश्चन है तो आप मुझे उसका आंसर भेजेंगे टाइप करके, वो जितने भी जो भी आंसर आ रहा है. याद रखना, ग्रिड इन क्वेश्चंस में 4 सिंबल से ज्यादा नहीं होते हैं. तो अकॉर्डिंगली फाइंड योर आंसर and send it to me. The SAT paper that you are going to write, guys, वो pencil paper based होगा. It's not an online paper. अभी SAT online नहीं हो रहा है आप लोगों के लिए. तो अक्टूबर, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये तीनों अटेम्प्ट पेपर पेंसिल बेस्ड है. तो उसी हिसाब से you have to calculate, rough work बहुत properly करना, because you may have to refer them again in your exam. So let me start with some problems. So if you see my sheet here, this is one problem which is called SAT challenge problem 2. This is real SAT problem, verbatim, word by word. Chapter 3 ka SAT problem 2. I give you 45 seconds. Please solve. Send your answers privately in the chat box A, B, C, D. Sorry. Okay. So I've got answers from, oh, very interesting. So these are very different answers. So अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ right कौन सा है, but आतिश, निष्ठा, सिमर, चिन्मय, मान, ईशान, जय and विनायक. कौन नहीं आया? परी कुलकर्णी, did I hear from you? नहीं आया ना आंसर अभी तक, परी? Okay. Sir, Yes, I think Ishan. it just got sent right now. Got it. Yes, Ishan. in our textbook it was question 1. This is question 1. कोई बात नहीं. It got me so confused. I was wondering, it's 2 different questions. देख लो भाई. Yeah, so that's a good correction. This is on your textbook SAT challenge problem 1 है, and on my screen it says 2. But I mean this problem. Yeah. So I'll request one of you to lead this and let me invite. I would want to invite, of course, this is the answer that you've given. I would want to invite Chinmay Agarwal on this. Chinmay Agarwal, Yes, read sir. the question loudly and then we discuss this. In the XY coordinate plane, how many points are a distance of 4 units From the from origin. the origin? And which option are you defending? Charlie, C. C. Okay. And Atish, so आप दोनों के साथ मैं एक साथ करूंगा. Atish, which option are you defending? I don't hear you, but I think you said B, right? 4 points, Atish? Okay. So since I don't hear you, Chinmay, you will lead this. So there's a XY coordinate plane. यहीं पे solve करते हैं, Chinmay. Yes, sir. And I draw this XY coordinate plane. And they say that from origin 4 units in XY coordinate plane, how many points are there which are 4 units from the origin? So let's say 4 unit पे 1, 2, 3, 4, plus 4 minus 4 plus 4 minus 4. ये 4 points हैं Chinmay. आपने 8 कैसे बोला? और कहाँ हैं? Sir, diagonal point. Diagonal. So 5, 6, 7, 8. है ना Chinmay? Yes, sir. But what about points which lie on this? So they will include, Atish. right? Atish, Chinmay, are you getting me? They will not be एक included. सर्कल में बना दूं जिसका रेडियस 4 है guys. So जितने भी पॉइंट इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आएंगे, they will be at a distance of 4 units from origin. Now I heard some voice. Nishtha, was that you? Yes, sir. I was asking if the points will be included because I think they will be included and then the answer will be more than 8.
हाँ 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 हाँ, तो मैं राइट आंसर पे तो आया ही नहीं, अभी तो मैं दो ऑप्शन डिस्कस कर रहा था. So the correct answer in this case happens to be there are infinite number of points. Bolo Atish. So this is the beauty of SAT, which you must appreciate with every problem. It's not so much about, what you know. It's more about how you apply what you know. So ये वो application, conceptual application को test करता है SAT, and that is the whole beauty of it. This is real SAT problem. Correct. Correct. I got your text as well. ठीक है. Now let me go ahead. Yes, Nishta. So अब ठीक है Nishta. Is that okay now? Pari bolo. Yes. What was the option that you had sent me, Pari? 4. I had sent 4, but I got Option B. But now you got it. Yeah. ठीक है. So, Ishan. so could you do the 12th one in the classwork? You mean to say book say 12th one, chapter 3 ka 12th problem? Yes. Okay, I'll do that. Before that, you do this problem. I'll do that. Yeah, sure. So this is the second part, SAT challenge question 2. ठीक है, तो बुक में ये क्वेश्चन नंबर 2 है और आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है. दिस इज अगेन रियल SAT गाइस, वर्बेटिम वर्ड बाय वर्ड. ये जब SAT में आया था इस डेटा पे 3 क्वेश्चन थे, मैंने एक ही पिक किया है. करो, कम ऑन जय, send your answers privately. So you can look into your book as well, or you can look on screen, whatever helps you. So is that an answer from you, Simar? ये आंसर भेज दिया आपने मुझे? Okay, I'll take that. Okay, Vinayak. Noted. So Vinayak, since others are solving and there's some time left, I will request you to relook at your working. Atish, noted. Good, correct. अच्छा, but Atish आपने सबको भेजा है आंसर. Now everybody can look at that answer. Try and not look at that answer, everyone. And I miss WhatsApp in this case. वहाँ chat को delete कर सकते हैं हम लोग, यहाँ delete नहीं कर सकते. चलो ठीक है, तो अब आंसर तो सबको पता ही है. Anyone is there? Yeah, no worries. So anyone who has not followed what's given, ये question ही समझ में नहीं आया पढ़ने के बाद, ऐसा कोई है? Please unmute and let me know. If you have not followed what's given. Sir, I got it, but I didn't get the answer right. Never mind. But you have understood the problem, right? Yes, sir. Let's do this. The grid above represents equally spaced streets in a town that has no one-way street. Very important. F marks the corner where a firehouse is located. Point W, X, Y, Z represent location of some other building. The fire company defines a buildings. यहाँ से सबसे important. This is the crux of the problem. The firehouse defines a building's M distance. उन्होंने कोई एक unit बनाया and they call it M distance. या एक parameter बनाया M distance. And इस कैसे define किया? This is defined as minimum number of blocks that a fire truck, of course from F, building F, must travel from firehouse to reach that particular building. For example, the building at X is an M distance of 2 and building at Y is at an M distance of half.
सो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करना है, ये हाफ है, ये हाफ, और ये 2 क्यों, यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, इधर आ जाएगा, या फिर ये स्ट्रीट पे आएगा, एंड दिस इज हाउ इट विल रीच एक्स, बिकॉज दिस इज डिफाइंड एज minimum number of blocks that a fire truck must travel to reach that building from F. So ये होता है किसी का m distance. तो ये तो डेटा था. Coming on to question now. अब देखो चिन्मय. All of the building in the town that are an m distance of 3 from the firehouse must lie on a circle, a square, a right isosceles triangle, pair of intersecting line or a line at a m distance of 3. तो सबसे पहले तो m distance of 3 पे कौन कौन सी बिल्डिंग है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. 1 2 3. A building out here will be at an m distance of 3. ये 3 ब्लॉक चल के यहाँ जाएंगे हम. Similarly, F से ऊपर जाओ 1 2 and 3. यहाँ पे जो बिल्डिंग होगी वो डिस्टेंस ऑफ 3 पे. इसी तरह से हॉरिजॉन्टली राइट में आ जाओ, ये m डिस्टेंस ऑफ 3 है. हॉरिजॉन्टली लेफ्ट पे आ जाओ 1 2 3, ये m डिस्टेंस ऑफ 3 पे है, यहाँ पे जो बिल्डिंग होगी. Let's look at some other buildings now. Let's look at a building जहाँ पे you are going 2 units down and a unit right. ये भी m distance 3 बोलेंगे. चाहे 1 आके यहाँ से आ जाना, जैसे भी आना है आपको, ये distance 3 होगा. Similarly, ये वाला जो distance है, ये भी m distance 3 होगा. Similarly, यहाँ पे जो building है, वो f से m distance of 3 होगा, ये f से m distance of 3 होगा. By the same logic, I will go 2 distance here and I'll come a distance down. एक street में नीचे आ गया, ये वाली building, a building out here. By the same logic, a building out here. By the same logic, अच्छा हम यहाँ पे miss कर गए थे क्या? नहीं, a building out here. So now if you really look at this, all the buildings that are at an m distance of 3 from firehouse, they are nothing but all of them lying on a circle, edges of circle. Yes. ये इसके पेरीमीटर पे है. So this looks like circle बोल रहा हूँ मैं. I'm so sorry. Square. Square. मैंने circle बोला और तुमने बोला yes sir. Sir, I understood that. तुम भी समझ गए थे और मैं भी समझ गया था, बट कुछ भी बोल रहा था मैं. So this is a square. Perimeter of a square. ठीक है. Now अब इसमें कुछ और questions भी थे. So this is a very popular question from SAT on coordinate. अब आप लोग इस पे गूगल करोगे तो आपको 2 क्वेश्चंस और मिलेंगे. एक हमने कर लिया इसमें, ठीक है, जो आपको चैलेंज क्वेश्चन की तरह किया. चलो वी गो अहेड. इसका एक क्वेश्चन नंबर 12 मैंने लिख लिया है. एक बार मैं ये खत्म करूंगा बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस टू क्वेश्चन नंबर 12. ये मैं खत्म करके आई विल ओपन द बुक एंड देन वील डू क्वेश्चन नंबर 12. चलो लेट्स सॉल्व दिस वन गाइस. कितना 30 सेकेंड्स. क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर बुक. Perfect. Ishan. मान थोड़ा सा समय है. Would you want to relook? करेक्ट मान. चिन्मय एक बार फिर से देखो. सिमर करेक्ट. करेक्ट परी. गुड निष्ठा. गुड जय हो रहा. गर्व आई थिंक तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना टाइप करने का, तो तुम दूर भी बैठे हो स्क्रीन से. सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर तुमको वैसे पार्टिसिपेट उसमें करना है, सो देयर इज एन ऑप्शन गर्व. फर्स्ट बेंच पे अगर तुम आ जाओगे तो वहां पे कीबोर्ड है, देन यू कैन यूज दैट चैट वाला बॉक्स. Okay, so now yes Chinmay, now this is correct. XY plane, lines, equation ये है. Crosses x axis at the point with coordinate this. What is the value of a? So नहीं गर्व, कुछ गड़बड़ी कर दिया आपने. So let me ask one of you. अच्छा, ultimately सबने ठीक कर लिया. Atish, do you want to do this problem? Yes, sir, I've done it. Okay, what is the answer? I got 0 as the answer. Because 0 is the answer. Value of this is 0. Okay. XY plane, there's a line with this equation. It crosses x-axis at a point
crosses x-axis at a point with coordinate a comma b. x-axis में वापस बोल रहा हूँ आतिश. It crosses x-axis. अगर x-axis को cross कर रहा है तो a और b में से क्या zero होगा guys? B 0 होना चाहिए था. Yes, and they are not asking value of b. तो for sure एक option जो कभी आंसर नहीं हो सकता बिना solve किए, I know is b. b can never be answer क्योंकि अगर कोई line x-axis को cross करेगी, can I go to my whiteboard? Where is my whiteboard? Okay, so what we are saying here that there is a coordinate plane, there is a coordinate plane, and there is some line which has some equation, and this line of ours crosses x-axis. क्या equation है? Can you tell me what is that equation? 5x minus 10. Yes, sir. हाँ, चलो मान लो यही है. So this is a positive slope का line. तो मैं कुछ भी बनाता हूँ. Let's say I draw it like this. So it is crossing x-axis at a comma b. अब x-axis पे ये वाला जो point है, which is b coordinate, this will be 0. वो बोल रहे हैं a बताओ. सबसे अच्छा तरीका इस equation में अगर ये point इस line पे है, it should satisfy this equation. Put y equal to 0 because b 0 है. 5 into a. x की जगह ये रखो, y की जगह b रखो, b 0 है तो मैंने 0 रखा, minus 10. और I can say 5a is 10 और a is equal to क्या रहे 2. ये आंसर आ रहा है क्या? Let me see. चांद यही है क्या आंसर? Which option? D. Yes, Yes. option D. Yes, sir. D. Okay, guys. Let's solve this problem. अब ये हो सकता है आपके बुक में चैलेंज प्रॉब्लम 3 हो तो उसको करेक्ट कर लेना. उसको कुछ नहीं करना है, इसको 4 बस इसको यहाँ 4 रहने दो, वहां 3 है. प्लीज डू दिस. अगेन एसएटी प्रॉब्लम वर्बेटिम. ये जो इमेजेस जैसा दिखता है ना आपको, ये सब एसएटी प्रॉब्लम्स हैं. प्लीज सॉल्व. ब्यूटीफुल वन, गुड प्रॉब्लम. You should not get this wrong. So how much time? How much time? 30 seconds? I didn't get this at all. Okay, never mind. I'll help you out. What is the slope of line in terms of C and D? Jay Vora, correct. Good. Correct, Atish. So I see only one reason why you will not get it, which is, कुछ mental blocks. कि standard equation में तो इसका मतलब ये होता है and things like that. Pari Kulkarni, correct. Very good. चिन्मय, redo. थोड़ा सा समय बचा है. जल्दी देखो, फटाफट देखो अपने steps को. What mistake have you made? Simar, good. Very good. Vinayak, waiting. Man, waiting. Okay, Man. So we start this we start discussion of this problem with Mankan. Mankan, please unmute, put on your video, and let's discuss this. So Man, the first thing is you have to read it loudly. Padho usko. The line y equals to kx plus 4 where k is a constant is graphed in the xy plane. If the line contains the point c comma d where c naught equals to 0 and d naught equals to 0, what is the slope of the line in terms of c and d? Perfect. So Man, अब ये जो equation है y is equal to kx plus 4. If I compare it with the standard equation of straight line, So I want to change my वो answer. change कर लेना. That is immaterial now. But let's do that discussion. So what is the slope of line? इसमें slope of line किससे मिल रहा है आपको in this equation? K y equals to mx plus c. Yes. If you compare it with y equal to mx plus c, which is the standard equation for a straight line where m represents the slope, अगर मैं उससे compare करूँगा, so k is nothing but slope of line. So basically they want an equation where k is represented in c and d form. Now this line has a point which is c comma d.
So x को replace करो c से, y को replace करो d से, and get everything in terms of c and d. Okay, for n. तो मैं वही करता हूँ. So it would be d is equal to k times, which is slope of line, into c plus 4. ये हो गया मेरा equation. So k would be equal to d minus 4. चिन्मय बाप देखो आपने 2 बार अटेम्प्ट किया और क्या बड़ी गलती की है. You identify. So this is the slope of line in terms of D and C. Answer is option A. Ishan? Yes, sir. Okay. I forgot that m in the equation means slope. I forgot that. Okay. So that was key here. चलो आगे बढ़ते हैं. Beautiful problem. 40 seconds, guys. A typical SAT problem. I can tell you ऐसा एक question तो आएगा. अच्छा, wow, yes, correct, correct. अभी तक जितने लोगों ने भी आंसर भेजा है सबका करेक्ट है. Sir, I had done these questions. हाँ, अच्छी बात है. Good. That was supposed to be done. अच्छा किया. मान सिमर correct. Correct. Who's left? Pari, Vinayak. Correct, Pari. I think it's only Vinayak now. बाकी सबका आंसर आ गया है. You through चिन्मय हो गया इसका? Yes, Vinayak, sir. Pari, correct. Atish, did you send me answer for this? Okay, correct. So guys, everybody here have got this right. So I'm not solving it, but in case you want me to discuss, do let me know. I'll discuss. Otherwise, I'm not solving this. Which of the following is graph of a linear function with a negative slope? So left to right में नीचे आनी चाहिए line. Possible answer is C or D. And a positive y-intercept. D में positive नहीं है. Sorry, C में positive नहीं है. The only answer is option D. Left. Answer is D. Let's solve this. Gem of a problem. I'll say best problem. This pure concept. So I give you full 90 seconds, 1.5 minutes. Please solve. What is the y-intercept of L? Multiple ways. Haji. So y-intercept means the one on top, right? That point. I forgot what is You y-intercepting. cannot be asking me this. Are you joking? Are you Yeah, asking me what I is mean, y- I thought intercept means it connects and y-axis. So then I joined those two together. I thought that was it. I just forgot that. Okay, so but I am not answering still. Okay. So I give you 1.5, 2 minutes. And at the same time, let me tell you, this can also be done in 15 seconds flat. Okay. Okay, Chinmay, got your answer. But take some more time. It's not your day possibly today. आज सब है ना गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है. वापस करो. Simmer, very good. Very good. That was quick and correct. अगर ये वाला किया तो I guess you can tell yourself that coordinate geometry SAT के लिए you are on the right track. You're there. You're almost there for this topic. Very good, Ishan. Good. I hope you got answer for your question. Good. Very good. चलो भाई. जय वोरा. Pari, Man. Okay, Man, correct. Very good, Man. This is good. Vinayak Patil. Nishtha.
Atish. Yes. Correct, Miss Kulkarni. मैंने किसको बोला था आंसर करेक्ट भेजने के लिए, देखने के लिए, वो अभी तक नहीं आया. निष्ठा करेक्ट. सो निष्ठा वी स्टार्ट विथ यू. अभी मैं बताऊंगा, ये डिस्कशन हम आपके साथ चालू करेंगे. गाइज आई विल बी इंटरेस्टेड इन योर मेथड बिकॉज लाइक आई सेड ये 2 मिनट्स में भी कर सकते हो आप और इसको आप 15 सेकेंड्स में भी कर सकते हो. सो आई वांट टू नो योर मेथड. Okay. So Adish, I really don't know if this is the midpoint. I don't know. How have you concluded that? मुझे नहीं पता. So I cannot say. From the given data, I'm not sure. So can I tell my method? अच्छा, you want to tell your method? ठीक है, पहले निष्ठा and then you. Okay. So shall we discuss this? करें इसको discussion. आतिश, विनायक पाटिल क्या करना है? Discussion चालू करें? Yeah, sir, discuss. ठीक है. So विनायक पाटिल, before निष्ठा says anything, have you understood the problem? ये समझ में आ गया? In the figure above एक line है L with a negative slope. You can see वो slope -2 दिया हुआ है line का. ठीक है बेटे? Which means what? Which means that अगर ये line का equation हम कभी बनाने जाएंगे, it should be y is equal to -2 times x, -2x rather, plus some constant c. ठीक है? Okay. ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने लिखा है? बिकॉज तुम नहीं थे उस क्लास में, तो आई रियली डोंट एक्सपेक्ट कि तुम इसको अभी क्रैक करोगे. सो बेसिकली दे आर आस्किंग अस y इंटरसेप्ट, जिसको c बोला जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, y इंटरसेप्ट, उनको c का वैल्यू चाहिए. So Nishtha, coming to you now, I want to know your method. Your answer is correct. Sir, the equation is y is equal to mx plus c, and then y is -2x plus c. So m will be -2, and then x will be 3, and c will be 4. So if we conclude by that, the equation is 4 is equal to -2 into 3 plus c. So 4 minus -6, so it's 4 plus 6, which is equal to c, which is c is equal to 10. बाप रे. ओके, चिन्मय को समझ में आया क्या बोला उसने? No, sir. So what she is saying is कि ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है स्क्रीन पे, वो दिख रहा है आपको? वो बोल रही है कि let this be the equation of line. Since this point, ये जो point आपको दिख रहा है, ये point line पे है, तो ये point इस equation को satisfy करना चाहिए. This point, जिसका coordinate क्या होगा? आतिश, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, 3,4. इसके coordinate 3,4 होगा? बोलो चिन्मय. Yes, sir. Now, if this point lies on this line, let me substitute x की जगह 3 and y की जगह 4. So this is 4 is equal to -2 times 3, which is -6, plus c. Now, if I further solve this, this is equal to x. This is equal to c equal to 10. So answer is y-intercept पूछा था 10, option B. Okay, sir. Okay, Ishan. Sir, initially I thought like I could use some Pythagoras theorem or something to solve it. Then as soon as I asked you if 3,4 is a midpoint, I realized, and then I got the answer on satisfying the equation in that. That's what I texted you. I'm sorry, I did not see your text. You said, can I put this in equation and get C? So why can? You should rather. But is there any other method? This is a good problem. I want to discuss at length. Any other method, guys? I did a very simple yet I don't know whether it would be perhaps stupid, but it was effective method. I put the point which is there, which is in the between on line L, that point which is there on top of 3,0. I don't know how to tell it. Yeah, on top of 3,0 directly, not that one, sir. That the other one. Yeah, I took that. I found that, so that would be 3,4 obviously. And then because it's given that the slope is -2, I thought because you can just reverse that and just keep on going the other way around, because it's 3 only down, because there are only 3 units below, right, in the x-axis. Okay. So I thought you could just reverse it and keep adding 2 on the y-axis, y coordinate, and you would get the y-intercept.
3 comma, you would get it as 0 comma 10. So that's how I got it. Brilliant. Very good. देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. You can only do this if you really understand ये लाइन का इक्वेशन होता क्या है. So this is y is equal to mx plus c. भाई स्लोप का क्या मतलब होता है गाइस? स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन y फॉर एवरी यूनिट चेंज इन x. स्लोप का मतलब होता है डेल्टा, अभी जो साइंस वाले स्टूडेंट है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. How much is my y changing when I change x by 1 unit? आपको अगर मेरा वो ऊबर वाला एग्जांपल याद है, for every 1 kilometer that I travel, मेरा y 10 rupees से बढ़ जाता है. Okay, so that is what slope means. So what is Ishan's method here? He says that ये point 3 है, ठीक है? अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, रादर ये पॉइंट 3,4 है, यहाँ पे ये 3 है. अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो फॉर श्योर ये 0, समथिंग होगा. बोलो, इसको मैं ना लॉजिकल रीजनिंग की तरह करने की कोशिश कर रहा है. अगर इसको मुझे 0,3 करना और ये स्लोप दिया हुआ है, दैट स्लोप इज नथिंग बट -2. स्लोप इज -2 मतलब इफ यू चेंज x by 1 unit, उसके रिवर्स डायरेक्शन में y विल चेंज बाय, अरे बाप रे क्या हुआ? I'll rephrase. I'm asking again. If I change x by 1 unit, what will be change in y? 2 units. In reverse direction. Reverse direction. मैं हर बार x को 1 से बढ़ाऊंगा, y 2 से कम हो जाएगा. x को 1 से कम करूंगा, y 2 से बढ़ जाएगा, क्योंकि स्लोप -2 है. इनवर्सली रिलेटेड है. ये समझ में आया कि नहीं? मुझसे पूछो नहीं समझ में आया तो. वो ऊबर वाला अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ, टोटल फेयर ऑन ऊबर राइड विल बी इक्वल टू 10 times नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल्ड प्लस 50 रुपीज. 50 रुपए बुकिंग चार्ज, कितना भी ट्रैवल करो नहीं करो 50 रुपए तो देना है. इफ ट्रैवल्ड इज 0, k equal to 0, टोटल फेयर 50. इफ यू ट्रैवल 1 किलोमीटर, टोटल फेयर 60. इफ यू ट्रैवल 2 किलोमीटर, टोटल फेयर 70. एवरी टाइम यू ऐड 1 किलोमीटर, टोटल फेयर 10 से बढ़ जाता है. स्लोप इज टेलिंग यू कि k को 1 से बढ़ाओगे, tf 10 से बढ़ जाएगा. In this case, slope is -2. Every time you increase x by 1, k will reduce by 2. Every time you reduce x by 1, y will increase by 2. ठीक है? तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मुझे इस पॉइंट पे जाना है, यहाँ पे x 3 है, इसको अगर 0 करना है तो x को 3 से कम करना है. ये पॉइंट से अगर ये पॉइंट पे जाना है तो x को 3 से कम करना है, मतलब y को 3 into -2 6 से बढ़ा देना है. y ऑलरेडी 4 है, 6 से बढ़ा दो, y होगा 10. आंसर इज 10. I didn't want to try making it very complex because I already didn't do the last one. I was not sure. I didn't do it. I mean, I don't know why are you justifying. Who told you your method is complex? No, I didn't want to make it complex by using the equation and everything. I thought just see the graph, what makes sense, write it down over there. That's it. So I am not favoring any method. I don't know. आपको जिस method से अच्छा लगता है, वो निष्ठा वाला method है, जो I think most of you would have done it. और एक ये वाला method है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस ज्यादा है. दोनों में राइट आंसर आता है और दोनों के आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे. You know. So it's like clearing the boundary by 80 meters and clearing the boundary by 100 meters in cricketing terms. Still you get 6 runs. वैसा वाला है. So I'm not preferring any method, but what I'm suggesting guys, कभी अटक जाओ ना, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था. Rate of increase of x and rate of increase of y, or decrease, rate of change बोलना चाहिए. So that is how this could be done. And आप अगर इसको इस तरह से देखोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा. चलो, but good discussion. आगे बढ़ते हैं. Sorry, आगे बढ़ते हैं. This is a simple problem. ये नहीं कर रहे हैं हम. We are not doing this. Let's do this one. Beautiful problem. A grid-in question. आपको आंसर टाइप करके मुझे भेजना है. There are no options here. SAT में कुछ questions, close to 13 problems मैथ्स में options नहीं होते हैं. तो ये उनमें से एक है. Okay, ईशान. Correct. Correct, Chinmay. Good. Mant, I will talk to you.
एक छोटा सा मिस्टेक किया है तुमने। गर्व कुमार बेटा, आप ये ऐसे लिख सकते हो, यू थिंक यू कैन राइट दिस टेक्स्ट, लिख सकते हैं कि हम ग्रेडियंट क्वेश्चन में मान गर्व उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर आता है ना, अल्फाबेट होते हैं क्या उसमें ग्रेडियंट में? फिर तुमने जो आंसर मुझे भेजा ये कैसे टाइप करोगे या कैसे लिखोगे? आतिश करेक्ट, सिमर करेक्ट, मान इफ यू वांट टू चेंज यू स्टिल हैव टाइम, नहीं तो हम लोग अभी करेंगे साथ में इसको। जय बोरा आपने करेक्ट किया है। Sir, may I use the washroom? हाँ, Ishan. yes, yes. I'm not used to this question when I'm doing class from home, so I was taken aback. चलो भाई, yes man, correct. Pari, we start with you. And before you do all of this, एक मिनट, हाँ, मैं मान और परी से बात करना चाहता हूँ। एक मिनट, let me come to the spotlight. Where am I? मुझे दोनों से बात करना है। आप लोग अभी भी एक बहुत फंडामेंटल मिस्टेक कर रहे हो। Unmute. Okay, so Man, do you know what are gradient problems? Yeah, so like we have to type the integer. We have to type the integer. You have to calculate the answer. Not necessarily it will be an integer, it could be a fraction also. And there are only 4 symbols मान जिसमें आप आंसर दे सकते हैं, है ना परी? आपको तो पता है। तो क्या आंसर आया है आपका परी? I think I got minus. पहले अनाउंस करो, आंसर अनाउंस करो, अभी बताओ मुझे आंसर। I got -1. -1। अब मुझे बताओ नेगेटिव साइन होता है क्या ग्रेडियंट में? माइनस का साइन होता है क्या ग्रेडियंट में? तुमको याद नहीं है ना? याद नहीं है ना? ठीक है। I don't remember. कभी भी देखो भाई, मैं आपको ना, आप सभी को एक बार फिर से बताता हूँ रिप्लेस पर। गाइस, ग्रेडियंट कैसा होता है? जैसे ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर करने के लिए आपके आंसर शीट में, जो आपको आंसर शीट मिलेगी एसएटी में, ऐसा एक टेबल मिलेगा उस क्वेश्चन के लिए। मान लो उसका क्वेश्चन नंबर 30 है, तो क्वेश्चन नंबर 30 लिखा होगा और ऐसा एक ग्रिड होगा। ये ग्रिड में आपको पेंसिल से आंसर लिखना है। इसके नीचे वाले इस रो में, सॉरी नॉट ग्रिड में, इस रो में आपको पेंसिल से आंसर लिखना है। इसके नीचे डेसिमल का साइन होगा, इसके नीचे फ्रैक्शन वाला साइन होगा, सॉरी डेसिमल तो सब जगह होगा, एंड देन फ्रैक्शन वाला साइन होगा, फ्रैक्शन वाला साइन होगा, फ्रैक्शन वाला होगा। देन यू विल हैव 0 1 2 3, ये सारे सिंबल्स होंगे 9 तक, 0 1 2 3 9 तक, एंड सो ऑन, 0 1 2 3 9 तक, 0 1 2 3 9 तक। ओके परी, अब आंसर आया -1, आपका कैलकुलेशन में आंसर आया -1। देयर इज नो वे यू कैन डू -1 क्योंकि नेगेटिव का तो साइन ही नहीं है। ये आंसर आया -3, तो जैसे ही आंसर आया और ये ग्रेडेड क्वेश्चन हो, यू शुड टेल योरसेल्फ आंसर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है एंटर योर आंसर विदाउट द साइन, तो -1 तो आंसर नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 3। तो 3 को एंटर कैसे करोगे? यू गाइस विल पिक अ पेंसिल, रादर यू ओनली हैव पेंसिल देयर, तो यहाँ पे लिखोगे 3, ये मैंने पेंसिल से लिखा 3। मैं नीचे जाऊंगा, 3 पे एक ऐसा वो बबल होगा जिसको मैं डार्कन कर दूंगा, तो आपको डार्कन भी करना है उस ओवल को, उस सर्कल को, और यहाँ पे 3 भी लिखना है। ये होता है ग्रेडियंट। तो अगर परी -1 आया तो पक्का आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव का तो साइन ही नहीं है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है आपने। ठीक है मान, आंसर डेसिमल में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। अच्छा, यहाँ तो फ्रैक्शन का साइन होता ही नहीं, बीच 2 पे ही होता है फ्रैक्शन का साइन। आंसर आया 3/2, तो आप 3 करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, इसको डार्क करेंगे, यहाँ इस पे आएंगे और यहाँ पे मान लो 2 है, इसको डार्क करेंगे। बस हर ग्रेडेड क्वेश्चन के लिए ये काम करना है, मैन्युअली लिखना है, डार्क करना है। अच्छा, ये 3 आप यहाँ भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है इस कोने पे लिखना है, आप एकदम लेफ्ट पे भी लिख सकते हो, बीच में नहीं लिख सकते। 3 0 मिलेगा आपको, या तो एकदम राइट एंड पे, लेफ्ट एंड पे लिखो या राइट एंड पे लिखो, बीच में नहीं लिख सकते 3। अगर सिर्फ 3 है आंसर तो सिंगल डिजिट। गॉट इट गाइस? Yes sir, got it. ठीक है, सो परी प्लीज सॉल्व दिस नाउ। In xy coordinate plane above,
line N is perpendicular to line L. What is the slope of line N? Do you know slope of line L? We can find it out. हाँ बोलो. Please help me out. We can take, it's like So I take line L. Coordinate of this point is 0, 1. 0, 1, and for x it's 3, 0. 3, 0. So slope of line is given by y2 minus y1 1 by, upon x2 minus x1. yeah. Okay, buddy? So this happens to be minus 1 by 3. जो लाइन इसको परपेंडिकुलर है उसका स्लोप होगा इसका रेसिप्रोकल -3. साइन चेंज +3. आंसर इज +3. रेसिप्रोकल साइन चेंज. ओके. Yes, sir. निष्ठा, गर्व, जय गोरा, चिन्मय, विनायक पूछो क्या पूछ रहे हो बेटे. प्लीज आस्क मी. हाँ सर आप कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन. ओके. कहां तक समझ में आया? ये समझ में आया. ये जो रेड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 1. ये वाला जो पॉइंट है ये समझ में आ गया. हाँ. So slope of line, which is m, is given by y2 minus y1. ये हमने अभी थियरी में देखा था, recap में, upon x2 minus x1. Change in y upon change in x. कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं उस लाइन पे. I will get slope of that line. ठीक है. तो मैंने इसको लिया x2. I am following a convention. I say this is x2 and this is x1. Yeah, sorry, मैंने y2 लिया है शायद. So let this be y2 and let this be x2. So this is x1 for me और उसके correspondingly this is y1 for me. मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, मुझे m मिल गया. m is nothing but slope, but this is slope of line L. It is given in the question कि एक लाइन और है which is n and it is perpendicular to line L. If two lines are perpendicular, then relationship between their slope is given by slope of 1 into slope of 2 is equal to -1. अभी देखा था ना theory में when class started. Yeah. So let's say I know m1 and I need to find m2. तो मैंने m1 की जगह रखा -1. Sorry, -1 by 3. So m2 will become 3. Okay. And that one more formula you gave in last or before that question, y is equal to m into x something plus c. So I think जो मेरे पहले 3 session I'll do with you, that was talking about equation of a straight line. Which standard are you in? Are you in 11th? Yeah, I just went into 11th. Okay, and you have taken science. You have maths with you. Yeah. Okay, तो तुमने straight line अगर पढ़ा होगा coordinate में, straight line का equation होता है, it can be given by this standard equation. So this is what we are saying. M is equal to y is equal to mx plus c. M is slope, c is constant, x and y are variable. हम लोग करेंगे आपके साथ ये एक बार फिर से. Okay. Okay, guys. 30 seconds. Basic conceptual problem. Again, SAT problem. Right. आपने पहले कर लिया था ईशान, correct? Sir, all the questions I did except 12th. आते हैं 12 पे. Let me do 1 or 2 more problems and I come to. Yeah, the 12th one is the exact same question as SAT challenge question 5. Repeat हुआ है. अच्छा. Correct, Jay, Atish, Pari, correct. Simar, Garv, Jaygora, Mankant, Nishtha, correct. Good. Chinmay, correct. Wow, everybody getting it right. And sir, Vinayak Patil. Line L has positive slope, passes through this point, 0, 0. Line K is perpendicular to this line. Which of the following must be true? कोई special case नहीं होना चाहिए. Must be true under all circumstances.
Yeah. Line K passes through origin. Zaruri nahi hai, may not. Will have positive slope. For sure will not have positive slope क्योंकि जिस line को वो perpendicular है उसका positive slope है दिया हुआ है question. Will have negative slope. For sure it will have a negative slope. Line K has positive x intercept. May not. बोल नहीं सकते D के लिए. A और D may not है. But C is 100%. This will always be true. Answer is C. Yes, Vinayak. No, Vinayak, nahi, Ishan. Yeah, so could you please just revise the part of circles in coordinate geometry? That part I didn't. In coordinate geometry. Yeah, that part I didn't get it properly. So what we will do is after this class, जब ये 4 बजे खत्म होगा, you'll have 15 minutes with you. Yeah. आप रुकना 4 to 4:15 we'll do that. Not in this class. Okay. ठीक है. अब आते हैं तुम्हारा question number. अच्छा एक ये करो नहीं ये नहीं करते हैं. Did we do modulus function? हमने modulus function किया है क्या क्लास में? Absolute function, modulus function. So in the last class discussed it. No sir, I forgot it. I didn't. ये वाला part देखो ऐसा ये जो ऐसा कुछ equation कभी किया है हमने क्लास में? Modulus function, absolute value. No. Yeah. So I will discuss this in next class when we meet next Sunday. Again, that's my class. So तब हम ये वाला question करेंगे. I'm not doing this problem right now. This would be the last problem for the day on this particular topic. Then I do question number 12 and we move to inequalities. Please do this 2 minutes. The same. This is the same as question 12. हाँ, तो बस ये करना है और आपका question 12 solve हो जाएगा फिर इसमें. Yes. ठीक है. This is हाँ ये बहुत ही अच्छा question है. If you miss one particular line, ये solve नहीं होगा. Or if you overread it, ध्यान से पढ़ना. 2 minutes. अच्छा छोटा सा friendly suggestion. See if you can draw first, visualize and then start solving. जो दिया है अगर आप उसको project कर सको पेपर पे तो बहुत जल्दी solve होगा ये. Yes, correct. Very good, Jayawar. So Jay, you be ready with your method. We'll start with you. This is question number 12 on your book. Great, good, Samar, good. Yes, guys, time up. Bolo, how do I start? Where do I start from? Any idea? Forget about right answer right now.
So XY plane, line L passes through origin. एक second रुक जाओ मैं पढ़ रहा हूँ बस ये. And this is perpendicular to some line which is 4x plus y equal to k. K is a constant. If these two lines they intersect at a point t comma t plus 1, what is the value of t? Yes. So First, I think we that, start. Sir, First, I I think But I think I solved it at the start, but then I didn't know what to like get. I solved that equation for like 4x plus y equal to k. Like I using mx plus c. So I found these. So first like that is what I did. sir, अच्छा ठीक है. Sir, is the answer option A? Yes, answer is option. even I got A as the answer. Yes, A is the right answer. And if you guys have got it, But, great. yeah, what I did in this question. Questions पूछता हूँ आपसे. देखो आ जाएगा answer. So if there is a line which passes through origin, what will be its equation like if it is passing through origin? Sir, y-intercept of that equation will be 0. Y-intercept of that equation will be 0. And ये जो मुझे equation दिया है, so let me stop share it. ये मेरे working उस पे जाते हैं. If you can you see my working space? yes, sir. So this is the equation given to me for one line. Let me bring it to the standard form. है ना पर ये भी standard form में नहीं है. So if I bring it to standard form क्या होगा वो? Minus 4x plus 2. जैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, आई नो दैट दिस इज अ लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप. ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, ये देखो. Yes, sir. ओके ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है. सो आई ड्रॉ सम रैंडम लाइन. आई डोंट नो, मैं कुछ भी बनाने की कोशिश करता हूं. तो रफली लेट्स से दिस इज द लाइन आई हैव गॉट. एंड देयर इज अनदर लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, बट दैट लाइन इज गिवन एज परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. Passing through origin. ऐसा बनेगा वो लाइन. ये इसको परपेंडिकुलर है. Now equation of this line would be equal to, इसने अभी बताया हमको आतिश ने कि इसका y इंटरसेप्ट 0 कर दो आप. तो कहना है इसका होगा y is equal to mx. Yes, sir. निष्ठा, परी, बोलो गर्व कुमार. आ रहे हैं समझ में? अब ये जो m है, do I know anything about m of this line? Yes, sir. M1, M2 is equal to -1 कर देंगे because the purple color हाँ line. तो m का वैल्यू बोलो ना फटाफट. Sorry, sir. 1 m by का वैल्यू 1/4. Sir, 1/4 आया. 1/4. बस इसका रेसिप्रोकल और साइन चेंज. सो कहना है इस इक्वेशन का ये वाले लाइन का इक्वेशन है y is equal to 1/4x. और एक ये जो पर्पल या ब्लू या जो भी आपको दिख रहा है ये वाला लाइन, दिस इज y is equal to -4x plus k. बोलिए अब यहां से आगे कैसे सॉल्व करते हैं? Yes, sir. आई नो वन मोर थिंग. सर इसमें t और t plus 1 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ये है t, t plus 1. हाँ क्या सब्स्टिट्यूट करना है? सॉरी, t, t plus 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. x की जगह t और t plus 1. वेरी गुड. So why make our life miserable by using this equation? Why not substitute these x and y coordinate in this equation? क्योंकि अगर ये पॉइंट ग्रीन वाली लाइन पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना परी. सिमर ऐसे ही किया है तुमने? विनायक आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है? Yeah. Okay. So I'll substitute x की जगह t and y की जगह t plus 1. So my equation becomes t plus 1 is equal to 1/4 times t x की जगह t. Ishan, are you there? Yes, sir. Let me solve it. So t minus 1/4 t इधर लाएंगे, this becomes 3/4 t. और उसको वहां ले जाओ 1 को तो -1. So t is equal to -4/3. आ गया आंसर. Oh, I was not sure about this one. So Okay. that, But if you guys realize there's nothing new. वो yeah. तो स्टार्टिंग में स्कोप बताया था, अगर आपको उतने से वो कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, आप हर प्रॉब्लम एसएटी का उस पे सॉल्व कर सकोगे. द ब्यूटी ऑफ एसएटी अनलाइक आईआईटी जेईई इज दे डोंट ओनली टेल यू व्हाट दे विल आस्क, दे डिफाइन कि हमको उसमें आपके कौन से लेवल तक अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो उन्होंने कोऑर्डिनेट में डिफाइन किया हुआ है पॉइंट का कॉन्सेप्ट, लाइन का इक्वेशन, और सर्कल में डिफाइन किया हुआ है वो सर्कल का इक्वेशन जहाँ पे रेडियस, जहाँ पे सेंटर ओरिजिन है, जहाँ पे सेंटर ओरिजिन नहीं है. तो इस तरह से पूरा कोऑर्डिनेट डिफाइंड है.
तो ये ऐसे सॉल्व होगा। अब परी कुलकर्णी, आप जो स्टार्टिंग में मुझे बोल रहे थे, आई कुडंट फॉलो मच, अब आप बताओ इसमें आप कहाँ तक, क्या डाउट है आपका? I did it till the y is equal to 1 by 4x and then I Very got. good. And you know that is the part only. अगर यहाँ तक आ गए आप, तब तो फिर कुछ नहीं बचा। Yeah. यहाँ तक पहुंचना है आप लोगों को, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। Then you realize कि अच्छा, let me substitute, जैसा अभी कोई बोल रहा था। I think Maan was saying something. Okay. Sir, I found till the slope. I found the slope of the other line. I found -4 and I found 1 by 4. Okay. And that's, after that it reached a blank. हाँ, so ये इक्वेशन तक अगर आपने पहुंच गए तो you have done all the hard work. Yeah. So this is all about coordinate, pure coordinate problems. Like I said, coordinate can be and will be combined with circles and trigonometry. तो वो जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा क्लास में, ये सर्कल पढ़ा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, या x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वाले जो दो इक्वेशंस हैं वो कोऑर्डिनेट में और ऐड हो जाएगा फॉर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्कल्स प्लस कोऑर्डिनेट। अदरवाइज प्योर कोऑर्डिनेट लाइन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। आई थिंक व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, चिन्मय अग्रवाल? 2:15, no, 2:05. 3:06 हो रहा है। वी टेक अ 5 minutes वाटर ब्रेक, 3:11 पे हम वापस मिलते हैं। Okay, sir. Okay guys, thank you.